Assalamu alaikum. I'm Muneeb Nawaz, and this is my friend who needs no introduction because she's just checking herself out in her screen and No, I'm not thinking taking my On it? yeah, this is Jugan. And Jugan, what is up, man? How are you? Because I just thought I'd give an introduction that is kind and awesome because that's who you are. Oh, this was an introduction? This was going to be an introduction till you were like, Well, I was, हाँ I was, अच्छा ये शो हो रहा I है was ordering अच्छा my... ये 13 नंबर शो ये सौदा घर भिजवा अच्छा। रही थी क्योंकि शो पे आई हूँ तो कौन सौदा सी ऐप से बताएं ये नहीं बता सकती। देखा क्योंकि जिस चीते। हाँ देखा उससे पैसे जो मिलते हैं है ना अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह का ही ये शो होना है आज क्योंकि हम लोग ढंग की बात तो कोई कर नहीं सकते क्योंकि और जुगन हमें गाजे में और हमें पैसे भी नहीं मिलते। हमें पैसे भी नहीं मिल रहे क्योंकि पैसों वाले शो पे जाके ये तमीज जी देखिए आज मैं ना सती सावित्री बन के ना आज अच्छा सो ये बताइए आपने जो फॉर्मूला अच्छा नहीं वो आप नहीं थी खैर नहीं वो आपकी दूसरी वो मेरी दूसरी नहीं वो आपकी दूसरी नहीं मेरी तीसरी चौथी अच्छा छठी अब छठी होने वाली क्या बात हो रही है जुगन हाउ यू आई एम गुड हाउ आर यू मिस्टर आई एम वेरी वेल इसको थोड़ा सा करीब कर लेते हैं मैं आपको वादा करती हूँ कि मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी पर चले ठीक है जस्ट इन केस विजुअल कट जाएगा थोड़ा सा ना विजुअल अच्छा ठीक है अच्छा सो जुग्स ये बताएं the idea behind this show originally was that I would get to know what your mindset is but you since I already know my mindset why are we wasting each other's time you know my mindset because those I was going to say those people want to know the person behind the brand of Jugan the Kazim. So, tell me, why did you become like this? well बहुत अरसे पहले एक मर था पुरानी बात थी एक मर था और एक मर था और एक और था और फिर चरखा चलना शुरू हुआ और रोशनदान से मैं आ गई और उससे पहले एक बड़ी बहन आ गई और एक छोटा भाई आ गया और फिर किसी ने मेरे सामने कह दिया मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम तो मैंने कहा मिडिल कि चाइल्ड फिर बोला इसी वेव को हम राइड करेंगे हाँ सारी जिंदगी कि असल में बचपन में मेरे साथ बहुत बुरी हुई मैं फिस गई बहन और भाई के प्यार के बीच में नहीं प्यार क्या मतलब उसको क्यों प्यार ही हुई? कहते हैं क्यों हुई हाँ एक और लड़का हो जाता तो लड़का लड़की हो जाता ये तो प्रॉब्लम हो गई ना कि बीच में मैंने जो एंट्री मारी एक बेटी एक्स्ट्रा हो गई ओहो 1902 की बात अब इधर हम रोएंगे हाँ moving on 30 years later you realized that in the next 5 years you will realize that's what I'm saying 30 years more than 30 or 35 years but that's okay but That's okay. in another 5 years you will realize what you are saying right now which is going to be 30 years from when you were born yeah but I'll be living on the moon with the rest of the people who booked their flights for the moon. interstellar shit Yes, interstellar. Well, interstellar, your shit, my shit, same shit. यही चाहती हैं आप शो पे मेरे शीट मैं शीट चाहती शीट हूँ बोल कि के you started it. मैं चाहती हूँ कि मुनीब नवाज बात करे बीप 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 नहीं, मेरे शो पे मैं बीप क्यों लगा? तुमने सारी जिंदगी मेरे साथ की है क्या बीप कब किया और मैंने? नॉन टेलीविजन स्क्रीन तो नॉन टेलीविजन स्क्रीन पे तो हम लोग ऐसे ही चलते हैं ना पहले एक बार ऑन एयर माफी मांग लो फिर मैं इंसान मैं आपसे बनूं। नहीं आई जाली नहीं ताड़ी मेहरबानी इन्हें ब्राइट करे दोनों राबिया देख रही हो ना वो भी नहीं देखती राबिया वो भी ने- नहीं देखती मैंने- तेरा लाइक्स में से राबिया का लाइक मैं नहीं है सबसे मजेदार चीजें बताऊं कि एक दफा ना मेरा जब ये चैनल बना ना इसके अंदर 7 सब्सक्राइबर्स थे 7 ठीक है तो मेरे दोस्त बैठ के हाँ हमने यही कैलकुलेट किया कि ये कौन कौन हो सकते हैं 7वें बंदे का हमें नहीं पता था क्योंकि राबिया नहीं थी तो एक दिन राबिया ने फोक कभी नहीं किया बोल हाँ राबिया को मैंने अपने पॉडकास्ट पे बुलाया उसने वो भी नहीं देखा क्यों बुलाया उस बेचारी को उसने खुद कहा था कि मैंने आना है क्योंकि उसने बड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करनी थी शी वो यू हुई? नो हाउ नहीं वो फिर हुई उसने खुद ही की ना मैं मेरा तो ताल्लुक नहीं होता इंटेलेक्चुअल से सो यू कैन इमेजिन घर वाला हाल यहाँ पे भी हो गया बिल्कुल obviously ठीक मतलब बात। there's no denying that there's the things that we have grown So up how with are things at अच्छा home, so How are tell things me how I mean things are kids, awesome man two things are, wives I mean the one wife how's it going एक होता है रोस्टिंग एक होता है Roasting. कब रोस्ट बना रहे roasting क्योंकि द रोस्टिंग ऑफ मुनीब नवाज अच्छा अब ये देखो ना फजाया बाजी का फरजाना मैं मुनीब नवाज के शो पे आई हुई हूँ मैं वो मसाज करने आई हुई है इनका आऊंगी आपके पास आऊंगी नेल्स ठीक कराने मसाज के लिए आई हुई है शो से फ्री ये होके आती हूँ। स्पेशल मसाज कराती है तकरीबन अपना
1.5 घंटे तक मैं आ रही हूँ। झूठ बोल रही है, जिस तरह ये चल रहा है 12 मिनट में आप घर होंगी। थैंक्स मैन, थैंक्स फॉर द लव। यू वेलकम जानी। अच्छा, सो जोक्स Yes, सीरियस वाला, अच्छा, थोड़ी अब देर, serious हो जाए। थोड़ी देर, अब- 3.5 मिनट। वायरल वाला कंटेंट रोक दें। अच्छा हाँ, so honestly speaking, the things that you've gone through in your life, you know, and all the bad stuff and the good stuff, and what keeps you freaking going, bro? Same thing that keeps you going. Which is, Our kids, our spouses, the fact that no matter how bad it gets, you know it's going to be okay. but before there were kids and before there were spouses, we were still going. What kept you going then? No, I kept going because like I was जिस stage पे आपको hit करना शुरू करता है ना कि oh God, what is my life coming to? I had already had Hamza. Yes, I had that is Hamza also, very young. yeah, yes. You remember Muneeb, you and I हमारी बड़ी दफ़ा ये गुफ्तगू हुई है कि मतलब Hamza and you know having a kid young and how because आप सबके बच्चे अभी डबल Yeah. डिजिट्स में भी नहीं नहीं पहुंचे पहुंचे, और नहीं। या पहुंचने वाले हैं। पहुंच- मेरा बच्चा 17 साल का हो जाएगा Yes, अगले साल माशाल्लाह, मार्च माशाल्लाह, में in 2023. So the fact is Hamza happened early. Yeah. लोग कहते हैं ना कि ओ एज अ सिंगल मदर उसने बड़ी सैक्रिफाइसेस की, मैंने अपनी जिंदगी भरपूर अंदाज में जी है। बिल्कुल। माय किड I will not deny you know that. this, you I will been not. there, seen it, gotten disgruntled, run away, came back, she was still at it. So the point is, and that's me. Yeah. I've always had a love and excitement for life, and I think at a very young age मुझे एहसास हो गया था कि shit happens तो happens and sometimes keeps happening. Yeah, yeah, every day. shit दिन में 1 या 2 दफा happen होती है, बाकी सारा दिन भी तो सब कुछ ठीक ही होता है। Yeah, तो yeah. ठीक है। And by the way, I am not some art of living the secret. Yeah. आजकल जो भी mindful LMNOP ट्रेंडिंग हाँ. में है, मैं वो कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहती हूँ, जो मैं खुद जान के नहीं जीती, और वो भी मेरी प्रोसेस है। So that's your coping mechanism. That's how you do it, and that But has Hamza nothing to do saved with. me from myself is the answer to your question. Okay. फर्स्ट सब सेट था, फिर जब बहुत कुछ बैड चीजें हो गई और वो क्यूमुलेट हो गई, उस स्टेज पे हमजा पैदा हो गया। हाँ. तो अपने ऊपर बेचारगी पे फोकस करने के बजाय मैं उधर निकल गई। तो वो जो एक स्टेज आता है ना एंजाइटी का और डिप्रेशन, आई मीन आई सफर फ्रॉम सिवियर एंजाइटी, Yes. बट मेरी क्रिपलिंग नहीं है क्योंकि Because there's something to do. मार्जिन ही नहीं था यार मुनीब। बच्चा सामना था, जब बच्चा नहीं सामना था तो मतलब मामा तो दिस वन तो दैट, आई मीन Yeah. अल्लाह का शुक्र है ये सब है। Exactly. वो कहते हैं ना नो मैन इज एन आइलैंड, नो मैन शुड इवन अटेम्प्ट टू बी एन आइलैंड। व्हाट अ टेरिबल आइडिया। Yeah. So when this whole thing started, when Hamza happened, but then from what I'm Now please gauging, don't ask me how Hamza happened and the process of that because वो गलत बात हो जाएगी। और मतलब just missed that yeah, boat. you missed that boat. I And who made? So the thing is that the art of living and all that stuff ends up being how you successful people like you end up saying things, and because you live a certain way, that is basically the art of living. Khair, that's besides the point. no मैंने भी आर्ट ऑफ लिविंग वाला कोर्स भी किया है, बट लाइक व्हेन आई वाज डूइंग इट, आई इंटर में शुरू में ना, इंटर वाले जमाने में। बाय द वे मुनीब, आई थिंक यू एंड आई आगे पीछे हमने किया था। Did you do it recently? I did it पहले ना, मैंने हाँ. वो पहले वाले लॉट में हाँ. किया था, नईम जमींदार वाले लॉट में, उसके आस पड़ोस या आस पड़ोस। अच्छा, अब बात ये है कि उसी दौरान जब पहला ही वो सेशन हुआ, मैंने कहा बट मैं तो यही कह रही हूँ। हाँ, आप लोग, हम लोग सिर्फ कहते हैं इस तरीके से, इसका मतलब ये नहीं हमें नहीं पता। हाँ, देखिए मैं तो बहुत महज़ब अंदाज में बिल्कुल गुफ्तगू आप करती हूँ। मुनीब नवाज अलबत्ता कभी तमीज़ के दायरे से बाहर निकलते जा रहे हैं। यार हम काम की बात करने, मेरे सोच पास रही वो हूँ देखे वो बच्चों ने कॉल आउट कर दूं। कॉल आउट करते हैं। अच्छा जी, कॉल आउट वापस आ जाए। Hello? हाँ जी, नहीं तू मेरा भाई है क्या? मैं भी तेरा भाई हूँ। हाँ, भाई अब बैठे बताएं। हैं। हाँ जी। अब सो यू नो माय क्वेश्चन इज दैट यू नो जिंदगी में जब ये धचके पड़े हैं और आपको माशाल्लाह एक्स्ट्रा पड़े हैं 2-4, हाँ जी। ठीक है, तो 6-7 when I was going to start counting, 4 तो कम थे, 4-5 तो मेरे सामने हुए हैं। देख, मुझे भी पता है कि रेटिंग बढ़ती है, जिस तरह हमारे ड्रामा में कहते हैं रेटिंग बढ़ती है जब ज्यादा हाँ, रोएंगे तो, हाँ। और जोर जोर से रोएंगे, हाँ, बट कॉमेडी से भी बढ़ जाती है रेटिंग। हाँ, so the thing is कि when those things were happening,
उस वक्त कोई सिखाने वाला था, या were you kind of internalizing? What was your process of coping, or was this attitude that you came out with? Because this is a very important thing, because a lot of people don't understand the shit that goes on behind the scenes in your life. But I do want to clarify one thing कि जो ये मैं कहने लगी हूँ यही चीज़ मुनीब नवाज को भी अप्लाई करती है. Okay then. We are very public, we are very loud people. मैं भी यही करती हूँ, मतलब मैं बहुत पब्लिक हूँ, बहुत लाउड हूँ. बट जो वो एक बहुत बड़ा मसला होता है ना, वो अंदर ही रहता है, और वो खुद ही उसकी प्रोसेस से, और वो अंदर जो आप एक्सटर्नली देख रहे होंगे मुनीब नवाज शोज कर रहे हैं, एवरीथिंग्स फाइन, बैक एंड पे वो जो एक layers amongst layers, when you see the matrix kind of situation, Yes. not at all. उसके अंदर ये डायलॉग चल रहा होता है, उसमें डिप्रेशन भी होती है, अपसेट भी होते हैं, वो सारा कुछ होता है. Yeah. बट उसको जिंदगी का इतना सा हिस्सा रखते हैं, बिकॉज उसके अलावा जो इतना कुछ है वो ज्यादा अहम है. But do you take that on particularly to deal with that stuff? Because there's different people do that differently. Like when I was recently going through some stuff and I was like, yaar, nahi, I can't focus on that. I'm just going to give myself 7 more projects just in case I had 4 less. So how are you and I any different? So that's what I'm asking you. Did you choose it? Because I choose it. देखो I choose to compartmentalize, जो बहुत बुरी चीज़ है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. Because when you keep compartmentalizing, कभी अलमारी भर भी जाती है, और जब वो खुलेगी तो फिर सब कुछ हम दोनों का रोड जाएगा, आस-पास में ही कमरा होगा. सब कुछ रोड जाएगा. In some mental happiness institution, मुझे नहीं पता ब्राइट वोक टर्म क्या है इसकी. एक तो वोक लोगों जरा आहिस्ता आहिस्ता चलो, बड़ी स्पीडे वो पकड़ते हो. हैशटैग रोज नहीं तो आते. जब तक एक चीज मैं पकड़ती हूँ कि अच्छा यू नो बाइनरी नॉन बाइनरी LMNO, ये मैंने अभी पकड़ी थी ये बात. LMNO. वो अगली बात हो चुकी है, कुछ नया हो गया है, मैं पुरानी फिर हो गई हूँ. It's okay. Hence therefore. It's like a marriage. Always happening. Constantly Always and constantly consistently getting old. So अच्छा सवाल यही था कि do you make it? Do you put this extra pressure on yourself to make yourself like this, or do you think you saw somebody that inspired you कि यार this is a better life of dealing with it? You know, I read, I was, how you know how Charlie Chaplin says कि comedy is very serious business. Yes. कुछ पढ़ा उनके बारे में, अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि अल्लाह ना करे कि किताब खोल लेती, कहीं गूगल, कहीं विकिपीडिया, कहीं LMNOP. Apparently Charlie Chaplin was a deeply like disturbed and very very मतलब मैनिक डिप्रेशन, बाइपोलर काइंड ऑफ मामला, बहुत हार्डकोर. लेकिन देखो कितने लोगों को हंसाते दुनिया से गया. दैट्स माई पॉइंट. माई शिट इज माई शिट. मस्ट आई डंप इट ऑन all and sundry? That's the point, right? That's exactly what I was trying to get at. That's what I do in my morning show every day, Jan. Yeah. I mean, like आज की बात कर रहे थे. You're most positive dash human being on the morning show. I'm like, that's why I'm never going to a show, because I can see through that shit. But no, but I believe that also. I do believe. No, I know you believe it. जीना है, गुजारना नहीं है, भरपूर अंदाज में जीना है. ये जब मैं बातें उर्दू में भी देखो, हम बड़े हुए बर्गर, फिर हम हमें थके पड़े तो हमें बन कबाब पड़ गए, हम फिर भाई लोग बन गए. बट भाई लोग की प्रॉब्लम ये है कि आई डू बिलीव दैट बहुत पॉजिटिविटी और अच्छाई है भी दुनिया में. बिल्कुल है. यस. मैंने शायद कम देखी, लेकिन जरूरी है कि मैं हर किसी को कहूँ कि देयर इज नथिंग गुलजार अबाउट द जिंदगी. देयर इज जस्ट डेथ, डिस्ट्रक्शन, वायलेंस, अब्यूज, यू नो, मेंटल टॉर्चर, कांस्टेंट अपहिल बैटल. कभी औरत होने का मसला तो कभी अग्रेसिव औरत होने का मसला, कभी डिवोर्स्ड होने का मसला, कभी ब्रोकन होम का बच्चा होने की वजह से ऐसे होना. I mean, there are so many reasons and excuses for what is this and what is that. Yeah. So when was the last time that caught up to you in momentarily? When I know exactly when, because जब हम ये बात भी कर रहे थे तो मैं सोच उसी के लिए बारे में रही थी. When I was pregnant with Noor, I already had a horrible, like मुनी, मतलब वो जो हम सुनते हैं ना मिसकैरेज और खून और वो हुआ,
और वो मेरे 4th month के एंड में हुआ एंड आई एम सॉरी दिस इज ग्राफिक एंड दिस इज हॉरिबल बट वी नीड टू एक्नॉलेज दैट मिसकैरेजेस आल्सो हैपन दैट यू नो समटाइम्स यू हैव टू एक्चुअली गो एंड अबॉर्ट अ परफेक्ट लाइक अ चाइल्ड बिकॉज आपको पता चला है कि वो बच्चे का ना सर डेवलप हुआ. मैं अभी एक इस तरह के केस के साथ डील करके आ रही हूँ. दिस वुमन्स डॉक्टर हैड टू इंड्यूस लेबर बिकॉज द चाइल्ड वॉज लाइक अ पैरासाइट बिकॉज वो डेवलप ही नहीं हुआ था. तो ये सब चीज़ें तो जिंदगी में होती हैं मुनीब. Yes. और सो इस वजह से जस्ट क्लैरिटी ऑन व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट सच अ ग्राफिक थिंग. तो वो दिस होल लाइक खून एंड दिस होल तमाशा एंड गोइंग टू द हॉस्पिटल एंड यू नो अगेन हैविंग दैट वाज माय सेकंड मिसकैरेज एंड आई वाज लाइक यार ये क्या है. एंड बिकॉज मेरी भी तो जिद थी ना कि मुझे बेटी चाहिए. कि मतलब दिस इज अल्लाह में ऐसे कॉन्वर्सेशंस भी होती है ना बड़ी डायरेक्ट किस्म की. बट और ये दिस वाज द फर्स्ट टाइम like what was inside the डराना स्कैरी whatever जो हम शेल्फ अवे करते थे वो बाहर निकल आके ना मुझे इस तरह करके देख रही थी वो चीज़. एंड आई एम लाइक तुम बहुत बद हो, तुम प्लीज दबा हो जाओ. But I'll get to that. So this whole miscarriage thing happened. So there's now this visual and physical experience जिससे गुजरी. फिर pregnant 2 महीने बाद ही हो गई. That was not a planned thing. The doctor had said 6 months. Try भी मत करना. अब इस पे नहीं पढ़ेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ समझ आ गया. अच्छा वो सब हो गया और प्रेग्नेंट हो गई और फिर डॉक्टर ने कहा आपको बहुत मुबारक हो, अब आप बेड रेस्ट पे जाएंगी. मुनीब कैन यू इमेजिन बीइंग ऑन बेड रेस्ट? जिस किस्म की तुम एक आवारा और साइकोटिक सी रूह हो मेरी तरह. तो आवारा साइकोटिक रूह को आप जब बिस्तर में लिटा देते तो उनका उस वक्त आई कुड नॉट ऑक्यूपाई माई सेल्फ विद एनी थिंग. खैर वो भी ढीठ उस हालत में भी बना ली अपनी ब्रांड नूर जो मेरी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं. क्या वाज प्रेग्नेंट विद नूर तो वो अच्छा वो भी कर लिया. लेकिन वो नहीं था ना कि सुबह 6 बजे से बटन ऑन हुआ और वो करके फाइनली जो है वो रात को 10 और 12 के दरमियान किसी टाइम वो बटन ऑफ हुआ और फिर सो गए. और फिर उठे. सोचने का मौका ही नहीं दिया ना. उस वक्त जो सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी पड़ी थी ना मुनीब, दिल चाहता था अपने बाल नोच लूं कि ये भी मैंने चीज़ इग्नोर कर दी, इसको साइड पे. मतलब अपने ऊपर गुस्सा चढ़ रहा था कि why so good and so kind to other people फिर भी दुनिया के लिए बुरे बने. बिल्कुल. You understand? अब ये मेरी इंटरनल कॉन्वर्सेशन है. आप लोग कह सकते हैं कि यार ये तो है ही डैन एंड दैट्स योर राइट. बट ये मेरी अपनी एक इंटरनल अंदर वाली जुगन से हो रही है कि यार you bend over backwards for the universe. Yes. बट डॉक्टर पे जाना होगा तो उस वक्त तक नहीं जाओगी जब तक तुम्हें स्ट्रेचर पे नहीं ले जाना पड़ेगा. इतनी अपने आप से नफरत क्यों? And did you come up with an answer? My answer to myself was ये हाल तो बंदा दुश्मनों का भी नहीं करता, क्योंकि अगर मेरा दुश्मन भी मुझे कहे कि यार मेरी हालत टाइट है, नहीं, that you will. I'm sure you will. I mean, and you have taken your enemies to the hospital and more, and taken care of them. But I did not put them there. I just want to clarify कि वो ये ना कहे कि अस्पताल भी सिर्फ जाता. तो वो है. मुनीब देखो, हर बंदे के एक इंटरनल ट्रॉमा होता है ना. बड़े होते हुए आपकी भी कुछ, आई लव दिस न्यू वर्ड दैट आई हैव डिस्कवर्ड, ट्रॉमा, महरूमियां. और ट्रॉमा फिर तो पीछे रह गए, तो पीछे 10 साल पहले लोग कह रहे थे. तो फिर मेरी तरह पुराने हो गए ना. सारे हर इंसान की बचपन में बड़े होते हुए कोई ना कोई महरूमियां रही हैं. बिल्कुल. Lack of a father figure in my life, which everyone connects obviously, and it's very natural that I'm married to someone 13 years older than me. And I call him Baba also ironically. So वही वाली बात है ना कि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड होती है. अगर मान ले तो मान ले, नहीं मानना तो ना माने. बचपन की मुनीब, all I learned to do growing up was मामा is bipolar and ये कोई डिनाई करने वाली, मतलब ये कोई मैं उनकी इजाज़त के बगैर, my mother admits it openly as well, and mama's always had mental health issues. So माँ के mental health issues, my father probably did have mental health issues. The problem is it was undiagnosed. He was very violent. Yeah. Extremely violent. So violence सारी ज़िंदगी देखी, मतलब सारी ज़िंदगी इन सेंस बचपन सारा देखा. उसके बाद कॉलेज चली गई, उसके बाद फिर चूज़ भी वही बंदा किया जो मेरे बाप की करोड़ गुना बुरी वर्जन था. बिल्कुल. अल्लाह उसको खुश रखे, उसको ज़िंदगी दे. मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइसेस थी. हाँ, ये शायद गिला शिकवा है कि मतलब अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, इसलिए इस तरह क्यों किया. नहीं, बस इस तरह करना ज़रूरी नहीं था. नहीं साथ रहना था तो बट चलो बार भी हो जाता है. मार कुट के साथ रखने की मुझे ना कभी समझ आई है ना कभी आएगी. बाय पर्सनल चॉइस आई मीन मुनीब, जब पहली दफ़ा हाथ उसने उठाया तो मुझे चले जाना चाहिए था. मैं रही
क्योंकि मुझे डिवोर्सी और डिवोर्स्ड होने वाले ठप्पे से डर लगता था. वो कहते हैं ना, योर वर्स्ट fears are always realized. Always. So you got to let go of your fears to reduce the level of trauma. Trauma जो आपकी डायरेक्शन में आता है ना, ये बड़ा मसला होता है ना उर्दू अंग्रेजी में, तो फिर वो बीच में the mayor of my player is great on the wonderful game हो जाता है ना, फिर मसला पड़ जाता है. हाँ. ठीक है. अच्छा. So when did you, because you know this is possibly one of the most important things that I'd like to try and cover over here, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये एड्रेस भी नहीं करने आती बातें जो आपने एड्रेस करके अपने साथ जो रगड़ाई कर ली हुई होती है, और जिस तरीके से you're very easily talking about the traumas and traumas of Munib, going through divorce, of going my through 16-17-year-old son has anxiety, and Hamza does, and by the way, this is Hamza talks about his anxiety openly, so I'm not like divulging अपने बच्चे की कोई पर्सनल बात, and I encourage him कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, क्योंकि ये मसला आ जाता है ना, जिस चीज़ की तरफ आप पहुंचना चाह रहे हैं कि फिर इस उम्र पे आके क्यों, जब हम छोटे थे अगर हमें तरीका पता चल जाता, क्योंकि मुनीब सारा बचपन हमें कहा गया कि चुप हो जाओ. Exactly. हम तो जब रोते भी थे तो हमें चीखें पड़ती थी कि रो क्यों रहे हो, yeah, मतलब रोने पे भी पाबंदी थी. बिल्कुल. Yeah. अब आज के बच्चे की तरफ फॉरवर्ड करो. मैंने तो कभी आज तक ये भी नहीं किया अपने बच्चों को, अल्लाह का शुक्र है, मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया. हाथ चलाकी में मेरे इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता ना मेरे पे इतना हाथ उठाया गया कि मेरी ये नज़र की शर्म ही खत्म हो गई. Yeah. मेरे बच्चे जितनी भी मैं जंगली हूँ, मेरे बच्चों की नज़र में वो एक हया है कि हमारी माँ है. बिल्कुल. हमजा हैज़ एंग्जाइटी. मुनीब उसका पूरा जिस्म ठंडा हो जाता है. I don't think my own anxiety has ever bothered me as much as when I watch my kid struggle with trying to explain What he's feeling. what he's feeling. और मुझे पता है उसको क्या हो रहा है. मुझे पता है उसके अंदर ऐसे like there's these wheels that are spinning inside his heart and then inside his head and somewhere in his soul, and it is this, I know what it feels like. और जब आपको एक तकलीफ का पता होता है और आप उसी तकलीफ से अपने बच्चे को गुजरते हुए देखते हो, तो वो जान निकल जाती है. भाई देखें, ये चीज़ें आपके देखो, अब समवन हु हैज़ डिप्रेशन इन दैट फैमिली, 50% चांस ज़रूर है कि उनको हो सकता है. अल्लाह ना करे कि हो. बिल्कुल. Yeah. मुझे एंग्जाइटी है, मेरी माई मदर इज बाइपोलर एंड आई एम ऑल्सो पॉसिबली बाइपोलर. आई एम नॉट, You're bipolar. I'm bipolar. But the point is, and that's okay. I recognize that and I try and deal with it the best way I can. And जिस दिन मुझे महसूस होगा कि अब मुझे दवाइयों की ज़रूरत है, मैं वो भी ले लूँगी. Obviously. क्योंकि Yeah, अगर you मुझे create कैंसर your होता दवाइयाँ. और मुझे कीमोथेरेपी मिलनी होती तो मैं वो कराती. Obviously. Yeah. So that childhood thing happened. You chose this life, this modeling, acting, filming, fame, going to be relevant, make your mark on the Oh world. God, I really don't care about being relevant. If I did, would I continuously be getting pregnant, having children and disappearing off the scene? Yes. Seriously? Seriously. हम उस इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे एक See, बच्चा that is पैदा also- कर लेते हैं ताकि Listen, हमारे बस बुढ़ापे का just- सहारा और फिर अपने करियर्स को परसू करते No, हैं. that is also a challenge that I think you take, and you have undertaken that. See, हाँ, देखा कि आप ये जो चीज नॉर्मल है ना, वो तो आपके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकती. मेरी रेलेवेंस लोगों पे नहीं डिपेंड करती. नहीं करती. मेरी That's what I'm रेलेवेंस saying. डिपेंड करती है मुनीब नवाज और राबिया. और I'll explain to you why. Because मुझे पता है रेलेवेंस से मुराद ये कि मैं मुनीब नवाज को, ये मैं बड़े दावे के साथ कहती हूँ 100%, कि मैं 50 साल बाद भी फ़ोन करूँगी ना और कहूँ, और ये हेलो हाई भी नहीं करूँगी, मुनीब मुझे ये चाहिए, मुझे वो मिल जाएगा. बिल्कुल. I mean, he's a turd. And which a also half. means a poop. By the way, Hassan's favorite icon, like emoji, is the poop emoji. तो हम सबको poop भेजते So हैं. हम लोग मेरे भी, I have a 9-year-old, so you can imagine how big the word poop is in my, and fart. I save documents with. I have taught my children to burp alphabets. There you go. See, goals. Hashtag go. Hashtag goals. जान दे. Yes. That's it. Okay. So, but See, I'm relevant. The question was, you chose a field. I chose a field in which I would not be doing the same thing again and again, so that my mind would be occupied, so that Munib You Nawaz can- you would be, can so that trauma. I would be Munib Nawaz. So you can be trauma free. No, that's how I learned to cope. No? Okay. So for the kids, for the 15-year-olds and the 20-year-olds and maybe the less or more, whoever are going through
trauma. Is that the lesson? Do you think if you were to teach this? No, you need to deal with your shit, guys. Like seriously, by dealing with your But shit. how? I mean, By talk about it. If you're feeling anxious, say I'm You feeling never anxious. spoke about it. Very few. Matlab, the few times that we've ever spoken about it, which was much later in Yes, life. Muneeb, because I'm as a result, I'm batshit crazy. I struggle with very, very severe depression sometimes, but you wouldn't know because Faisal will be sleeping next to me in the bed. My kids will have gone to bed. I would have done a whole halla gulla raat ka. Meri raat ka bedtime is a production, na? Yeah. Noor ke tamashe, Hassan ke tamashe, Hamza ke tamashe. Then my foster son, who I call my adopted son, क्योंकि यहाँ पे foster son की किसी को नहीं आती, तो for 2 years Isa has been living with them. तो मतलब ये बहुत से रंग बिरंगे बच्चे हैं. And then if my step kids are here, Dania and Kamal, तो It's a house full. ये सारी प्रोडक्शन होगी. मुझे जैसे ही फैसल के खराटों की आवाज़ आएगी और अल्हम्दुलिल्लाह हमसायों को भी आती है, तो आई विल गेट अप, आई विल वॉक अक्रॉस द रूम, आई विल गो थ्रू माय ड्रेसिंग रूम, आई विल गो टू माय बाथरूम. और बाय द वे देयर इज अ रीजन व्हाई फैसल और मेरे बाथरूम सेपरेट है. इट्स नॉट जस्ट अ हाइजीन थिंग, नंबर वन इट्स हाइजीन थिंग, बट इट्स ऑल्सो द फैक्ट दैट वो वाहिद जगह है जहाँ पे जब आप शावर और नलका खोल देते हो और एग्जॉस्ट ऑन कर देते हो तो इतना शोर हो जाता है कि अगर आप ऊंचा भी रो रहे होते हो किसी को आवाज़ नहीं जाती. So no, do not internalize, do not keep it stuck inside. Your body is not some prison. Let it out. Say what you need to say. Look. And find the right people to say it too. I think that's also a very important thing because हम लोगों के टाइम पे it was possibly one of the most difficult things to talk about ना कि ये किससे बात करें. अब के ये जो हैशटैग वाली जो कॉम है, they need, and they're also struggling. I'll tell you this much. I'm sure Hamza would tell you this much, and my son also tells me this much. कि यार to build those kind of friendships that we've been able to build, alhamdulillah, they don't know how to. John, they don't know how to, but हम लोग आपस में ये बातें भी नहीं करते थे. अब मुझे बताओ कि ये क्या मामला है. हाँ, हम लोगों ने ये बातें हमने ये बातें बहुत लेट नहीं. यू एंड आई खैर भी हम तो जब सजनी शूट कर रहे थे 16-17 साल, पता नहीं कितने साल हो गए, काफी सारे साल में बड़े साल हो गए. उतने साल पहले तो हम तब तो यू एंड आई वर टॉकिंग. Yeah, we were. Because you asked me how I was doing, and at that time I was a single mom with a 6-month-old child. Yeah. So yes, about 16 years ago I think. Yeah. तो बेब आप क्या बात कर रहे हो. देखो कुछ रूहें कनेक्ट कर जाती हैं. बिल्कुल. जैसे कि मेरा कज़न है शामिल सैगल, ही इज़ माई खाला सन, who by the way they kept trying to get us married because they thought हम बड़े soulmates हैं. हमें बिल्कुल एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, है और कभी होगा, but we connected. Yeah. और मेरे से 9-10 साल बड़ा है. उसको चीकू बुलाते हैं सब प्यार से. So चीकू and I used to hang out all the time. और वो कराची में था, मैं लाहौर में थी. तो समझ में जब मैं जाती थी या विंटर्स में उनका जब चक्कर लगता था तो वो पूरे 6 महीने का मलबा वहाँ पे निकाल दिया जाता था. बिल्कुल. सो कोई ना कोई मिल गया जिंदगी में. बिल्कुल. ऐसा साथी. बिल्कुल. बट यू हैव टू इन्वेस्ट. मैंने भी अगर तुम्हें 2 बार 6 बातें कही, बल्कि 10 कही, तो आपने एक बात तो कही थी ना. बिल्कुल. No. कोई उंगली या सिरा पकड़ाएगा तो बात करेंगे. बिल्कुल. So that vulnerability is your strength, and also the strength is your vulnerability. Basically, eventually ends up being that sort of complex dashism that you have. So do you, Muneeb? By the way, I do. 90% of the nonsense that he's trying to deflect on to me reflects right back on him. But they will never know, because I'm not joking. Acha, so the question later on. Not chicken? I'm not chicken. Damn it. Okay, हाँ. जब फिर? अच्छा, फिर ये. So. नहीं, hold on. Old school. और बताओ ना. और बताओ. और सुनाओ. That's my pet peeve, by the way. वाह. और सुनाओ. तो ये आप अपने शो में दिन में कितनी दफा बोलती हैं? बिल्कुल भी नहीं बोलती. कितनी दफा मैंने कहा? I don't know. I don't watch it. ये जो एक लाइन है ना, जो मेरी इरिटेटिंग है. अच्छा, मेरे फेक शो पे और आपके बहुत रियल शो पे. नहीं, आपका इतना कूल लगता है आपका शो. मुझे, you know, I've been your biggest freaking fan since you were a child. But the only reason he's been my fan is because he's like, पता है जो ड्रामे कर रही होती है मॉर्निंग शो पे. हाँ. और I'm like, Muneeb, that's me. नहीं, मतलब ये ड्रामे कर रही है. He's just waiting for me to crack one day on air. No, never. No, but that'll be fun. Can you imagine one day if I'm like, Never. Because, you know, I remember this conversation again 15-16 years ago when you walked into my house in one fine morning and you were like, हम लोग बैठ के मेरे जले हुए pancakes आपने उसमें में, that's the only day I burnt pancakes in my life. रबड़ जैसे
अच्छा बाकी बात कर लेते हैं। बाकी बात वो ये था कि उस वक्त जुगल ने बैठ के मुझे कहा कि यार, मैंने पूछा ना कि अच्छा क्या सीन है अब ज़िंदगी का, क्या करना है, तो जुगल ने उस वक्त मुझे बैठ के कहा कि यार अच्छा ये है, उस वक्त एक साहब थे ज़िंदगी में, वो साहब हैं, उनके साथ इतना मेरे चलेगा। सामने वाली खिड़की नहीं, में कोई वो नहीं था सीन। मेरे सामने वाले एक अजीब से अंकल रहते थे, उनके साथ आपका कोई सीन नहीं था। सो तुम्हें क्या पता? मुझे पता है, ट्रस्ट क्या मी। पता मैं उनसे उन्हें प्यार से डैडी कहती थी। अच्छा चलो आगे बढ़ते खुदा दी कसम मैंने पता है। अच्छा सो जुगन के साथ में बैठा, हमने कहा कि क्या सीन है जिंदगी का, राबा भी उठी, उसने कहा क्या करें, अच्छा आप दोनों बैठे, चलो मैं जा रही हूँ। उसने कहा कोई पर बाय द वे ये इनकी इंटेलेक्चुअल बीवी है, ठीक हाँ। है, तो उसको हम कितने को स्टूपिड और मतलब पॉइंटलेस ह्यूमन बीइंग्स लगते होंगे। हाँ। आई उसने देखा और लिटरली आंखें मलती हुई आई, कुछ मलती हुई वापस गई। शी वाज लाइक गेट लॉस्ट। I've got I have don't many more exciting things that don't which is include you sleeping two. would be much far better. So उस वक्त चल हमने आमिर खराटे पूछा, मारती है। मैंने रिकॉर्ड कभी किए थे बट हाँ। So I feel like we're married to snorers. I feel like because no, we're she's married. I snore more than most other human beings I know. So अच्छा, so the thing is कि उस वक्त जुगन ने मुझे बैठ के कहा कि मैं अब ये करूंगी, उसके बाद ना मैंने मॉर्निंग शो शुरू कर देना और उसके अंदर मैंने अपनी मैंने किया जिंदगी कि नहीं किया। So that is exactly what I'm telling the kids out there. मिसगाइडेड मिसाइल की तरह नहीं निकलना। हाँ, to set your own dash targets, to set your own targets, and because you will only achieve what you set out to achieve, no matter how low your goal is, no matter how high your goal is, you will do it. And this thing is a life example of that thing, कि ये thing ऐसे हो जाते हैं No, अगर but आप and अपने one more goals thing. बना लें। If someone tells you you will amount to nothing, I am a classic example of that person. मुझे सारी ज़िंदगी यही महसूस कराया गया कि मैं अपनी बहन की तरह प्यारी नहीं हूँ, आपा की तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लड़का नहीं हूँ, क्योंकि भाई मैं जो शुरू में मिडिल चाइल्ड वाली एक रैंट की थी मैंने, वो एक्चुअली कम्प्लीटली झूठ नहीं है, वो भी कनेक्टेड है टू लाइफ एंड जर्नी। आई मीन I was supposed to be the one जिसकी किसी अच्छी सी चिन्योटी फैमिली में 13-14 साल की उम्र में शादी करा के इसको तो फारग करो ना, इसको निकालो बाहर। My journey was completely different. There were things I wanted to do, there were things I wanted to achieve, and I have achieved them. Yes. A lot of people say to me, oh, movies, film star. मैंने वो पंगा किया जब मुझे लगा कि ये पंगा मेरे हिसाब का नहीं। और बाय द वे मेरी एक बड़ी ही चीप पंजाबी फिल्म भी आने वाली है। चीप से मुराद फनी, मैड, लाहौरी सेंस ऑफ ह्यूमर। तो जिनका मेरे जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर है, शायद 4 से 6 लोग, उनको पसंद आएगी। सो यू विल कम एंड यू विल स्टे, बिकॉज मुझे इस बार कामी ने कामयार रुकनी थी तो घूम के मेरी ब्लंटली कह दिया, कहते आई एम नॉट सिटिंग थ्रू एनी मोर शिट प्रोजेक्ट्स ऑफ योर्स। At least he's understanding his own self. यार अच्छा, can I tell you something? Even if my friend has done something shit, I will go there, I'll go woohoo! Yes, that's who amazing. you are. And then पूरा रास्ता गाड़ी में ला तेरी जिंदगी फिड़े मुंह तेरा, मेरी जिंदगी की 3 घंटे तेरी, तो कुत्ते बड़े पास वाले फोड़े निकलेंगे, लख्ती लानत। मतलब and That's stuff her like way that. of showing love. Yes, being abusive. Yes, that's Don't be abusive to people. That is a bad way to show love. अच्छा, सीरियस बात पे अगर आ जाएं वापस, तो अपने ट्रॉमे को एक तो बाहर निकालो, जो भी हो रहा है। और इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रॉमे को ट्रॉमे के साथ आप काउंटर करें, कि मतलब आपको गुस्सा चढ़ रहा है तो आप मुक्के घूंसे मारने शुरू करते हैं। किक बॉक्सिंग पे चले जाएं, किसी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें जो आपको एग्जॉस्ट भी करे, और अब मैं कहूँगी प्लेजर भी दे, तो उसको ही करना शुरू करने की, उसका दिमाग गटर में ही जाना है। बट बात ये है कि I do that every day. Not go in the gutter. I was going to say, See, अभी मैं स्पीकर पे राबिया को कॉल करूंगी और तेरी इतनी बेइज्जती होनी है ना। मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा था ना कि ये पता चलता है किसका दिमाग कितना गटर में जा रहा है। अब किसी मसाज वाले का फिर आगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी सिस्टर इन लॉ का फोन है, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। एक सेकंड, एक आई एम जस्ट कमिंग इन 10 to 15 minutes. Okay. That's what she said. Okay. I'll see you in a few. Bye baby, love you. Okay, done. Bye. ये होता है टेका, सिस्टर इन लॉ का टेका। No, I'm just kidding, man. She's Faisal's older brother's wife, but I love her. Okay, cool. Like, and by the way, she's a psychotherapist. No wonder you love her. I love her. I look up to her. I can only imagine. Is she tall? Yes, she is.
Irumla Queen. Let's. She's amazing. Oh, I've heard the name. Exactly. Exactly. भाई के जाने वाले को हल्का ना लगे. I want. Hook me up, bruh. We're planning sorting out her husband's surprise birthday, which will have happened by the time this happens. So Acha, so question. Another. What is your sort of now take on last two serious questions, then we'll move to the fucked up part of the interview. Oh, there's a fucked up part as well. No, there isn't, because we already covered that bit. So the thing is, as far as you are concerned, like we were discussing before the call, interrupted us, set your own goals. Your own traumas can wait. Your own traumas can be figured out. Set your own goals. The other thing is, we all obviously, you've already mentioned your insecurities. हम फैसल और आप the boys की जिंदगी में आ जाते हैं आपके. They've been boys. And what is your take on the new hashtag masculinity and that sort of situation? What do women want actually? That's a much better question. I think that's such a Passe. no. I mean, every woman wants something different. I'm really sorry. Okay. I really like. I love my husband. I think Faisal's awesome. Yeah. But please don't tell him that. सिर्फ सवार हो जाएगा फिर it's a whole different can of worms that one. But the point is, अच्छे I love my सालगिरह. husband हाँ. very much. Yes. And for me to say my husband, like my husband or being called someone's wife or something, I was never cool with. Like Yeah. I hated that. तो Yeah. ये 10 साल हो गए तो अब मैं 10 साल हो गए यार. माशाल्लाह. मैं उसको करना है, फैसल को बनती है तुम ज़्यादा. लोगों ने तो ये इतने बदतमीज हैं. मेरी रिसेप्शन पे उसको जाके हाथ मिला रहे और कह रहे सो सॉरी फॉर योर लॉस, सो सॉरी फॉर योर लॉस. हम लाइक बगैर तो कहीं 2 मिनट की तो जवाब याद आ गया. राबिया कच्ची हुई है कि ये किसने क्या हरकत की है अभी. और मैं मतलब और हंसी जा रहा है उसके बाद इसी तरह गधों की तरह. हर कोई अफसोस कर रहा है जाके मेरे मियाँ से. तो फिर मेरे जनाजे में मुबारक दे देना उसको जाके. अच्छा खैर तो किधर से क्या बात क्या हो रही थी फिर भूल गई ना. What do women want? Dude, every woman wants something different. But at different points in मुझे your life, definitely did you आप not बताओ. want this? Did you Every want the woman same? does not want Muneeb Nawaz. Every man, actually every woman and man and Does not want and Muneeb transgender and non-binary, whatever, LRGBT, whatever, doesn't want you. I'm glad. Some people will, some people won't, which means कि हर बंदे की preference फर्क है, मुख्तलिफ है. Okay. हमने ये जो डब्बों में लोगों को डाल दिया है, अब हम वही हरकत कर रहे हैं लोगों की पर्सनालिटीज या एक मोल्ड के साथ जो हमने पहले अपीयरेंसेस के साथ किया था मर्दों की और औरतों की. अब अगर औरत सूखी सड़ी नहीं है, she doesn't have the perfect breast, she doesn't have the perfect butt, and she isn't tall, legs forever, none of which I am. So you can imagine how I feel. So बात ये है कि ये एक परफेक्ट फीमेल बॉडी टाइप है, ये एक परफेक्ट मेल बॉडी टाइप है. खुद लड़ रहे हो तुम लोग इसी चीज के बारे में कि लोगों को क्यों मोल्ड में डालते हो. स्टॉप फैट शेमिंग, स्टॉप बॉडी शेमिंग. अब आप लोगों की पर्सनैलिटी शेमिंग पे आ गए हो. इस डायरेक्शन में कभी सोचा? Yes, that's Okay. Yeah. This is something that bothers me. Muneeb, women want this kind of a man. भाई क्यों? Who the hell are you to speak for me? Stop speaking for me. That's awesome. I want a certain kind of man. Don't twist it. Kind of. We'll talk about it some other point on some other kind of secret website. Anyway, no. But my point is, देखो मजाक से जाक अपनी जगह. Faisal and I fit. Yeah. But who would have thought? I thought I fit with someone else, and you know who that person Yeah. is. I thought we fit. I thought that was it. Yeah. I look back now and I'm like, Allah ka shukr hai that didn't happen. Yeah. For him and for me. Yeah. Because it would have been this sort of Weird. It would have been it wouldn't have made me happy because I am someone who wants to be loved. Everyone does, but मेरी को बहुत ज्यादा जरूरत है ना कि हर कोई मुझे प्यार करे, मुझे डांडिया करे, उनकी भी यही जरूरत थी कि सिर्फ सारे उन्हीं को प्यार करें. जी. हाँ. So वो नहीं हो सकता. और आपने दिया भी इतना ज्यादा प्यार ना उनको कि बेसिकली उनके प्यार की जो नीड का जो पेट भरा था ना वो आप नहीं भरा था, और वो आज भी इसी वजह से चल रहा है कि अभी खैर छोड़े मैं बोलने लगा था बट मेरा सिर्फ ये छोटी सी नाकिसी राय है कि why do we have to keep like a hamster on a wheel torturing ourselves? I get violence is unacceptable. I agree with that 100%. But Yeah. अब एक ज़रा सी twisted बात कहूँ. What about people who like violence in a different area in their life? Yeah. Consensual. Yeah. तो ये कहना कि वायलेंस अनएक्सेप्टेबल ऑल टुगेदर ज्यादती है, क्योंकि ये बात मैंने कहीं पे कही तो
मेरी गोरी एक दोस्त है, उसने मुझे घूम के कहा, बट जे आई लाइक वायलेंस इन अ सर्टन एरिया इन लाइफ. तो मैंने कहा हाँ तो, बट वी हैव टू स्टॉप व्हाटएवर. तो यानी कि But ये that's नहीं not कि हर what- बंदा एक बंदा, देखो जो चीज करनी है कंसेंशुअल होनी चाहिए. बिल्कुल. मैं इस बात पे 100% कायम हूं, लेकिन प्लीज डोंट स्पीक फॉर मी. Okay. Don't tell me what kind of a man I should be with or what kind of a woman is ideal, because अगर एक ही किस्म की औरत और एक ही किस्म का आइडियल है मर्द और Then औरत, we've तो बाकी got- दुनिया then- मर जाए. then we've kind of lost the whole track. कोई of लंबा है, कोई छोटा है, कोई someone's चौड़ी हड्डियां हैं लेकिन दे आर स्किनी, अदर पीपल आर स्किनी बट दे आर चबी. मतलब बॉडी टाइप्स अगर करोड़ों हैं, बाल मुख्तलिफ किस्म के, आंखें पर्सनैलिटीज क्यों नहीं हो सकती? That's a good point. Acha, You want to ask me what Jugan wants? Yes. That's the right question. Let's ask what Jugan wants. Oh God. Let's do it. Since you brought it on, I was going to like kind of just but Am I blushing? Allah की कसम मुझे लग रहा है बुला लो. Chuck E. Cheese. Chuck E. Cheese. Chuck E. Cheese. You've called me Chucky my whole life, so stop Chuck E. trying to be Cheese. polite about Chuck E. Cheese. हाँ. तो So what does Jugan want now? now. Yeah. Oh, that's even a better question. Yes. What do I want now? Because Because now पे बड़ी relevance आ जाती है जिंदगी की. I just want to work constantly. I love my kids. Yeah. I adore them. Yeah. They make my heart sing. But I'm just not that mom that hangs out with their kids 24/7. And I'm not going to apologize for that. They are my kids. This is my family. We will figure it out. So ये मैं पहले सबसे पहले तो क्लियर कर दूँ. उसमें बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं हाय मजबूरी के तहत निकलना पड़ा. Jugan just wants a world where if a man works, a woman works, if a man stays at home and a woman goes to work, or if both decide to stay at home and homeschool their kids, people should be able to live their lives on their own terms. Yeah. So that's what Jugan wants. I just want to be able to live. I want to stop being put into dabbas. Yeah. मॉर्निंग शो होस्ट, रमजान ट्रांसमिशन होस्ट, फिल्में भी की हैं, रमजान ट्रांसमिशंस भी होस्ट किए हैं. Yeah. व्हाट्स द प्रॉब्लम? None. जिंदगी बहुत. My question was not so. What does Jugan want now? Because now की relevance अब I've थोड़ी got सी- everything I want. Okay. I mean, material things wise, emotionally as well. अल्लाह का बहुत शुक्र है. Allah Or का- whatever anybody believes Believes in. in, yeah. You know, Allah, Bhagwan, Khuda, whatever. Yeah, yeah. Like whatever is out there in the universe for whoever, whatever that means to anyone. Yeah. Thank you. Okay. I'm good. Gratitude. I'm just exhausted because I'm a workaholic. So, Jugan, Yes. quick वाले questions. Pet peeve. और बताओ. Yes. What's the biggest screw up in kitchen that you've ever had? Not the screw down, screw up. Up. How do you screw someone up? There you go. That's the Jugan I was waiting Next for. question. No, have you ever? Are you a cooking person? Yes, I have been since I was a very little girl. You wanted You- a quick answer. This can't be a quick answer. Okay, I put bleach in a cake to make it a white chocolate cake. But I was nine. I was 9. That is it. I was That 9 is years it. old. That is it. Okay. That is it. What's the one thing you're most tired of hearing these days? मर्डी हो गई हैं. Nice. I like that. I like that. Acha, what's the weirdest thing a fan has ever done for you? Or to you? Not to you. For आप भी you. आप Not to इतनी अच्छी. you. आप हमने टू में तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं खैर अल्लाह का शुक्र है फैन फिर भी ठीक लोग हैं. दूसरे ठीक नहीं है. और बात नहीं कि एक फवारा निकला थूक का. अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देती हूँ. अच्छा हाँ, क्या बात करें, क्योंकि ये मुझे अक्सर कहता है से इट स्प्रे डोंट स्प्रे इट. हाँ. अच्छा तो फैन. अच्छा ये अब गुफ्तगू मुझसे हो रही है. आप ही मैं आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ. आप ही मेरी पूरी फैमिली आपको देखिए. आप ही मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ. आप ही आप उनसे शादी करेंगी? I want to know what you said after that. मैंने कहा ज़रूर बेटा. That's the least I would have expected, yes. I mean, अब इस स्टेज पे क्योंकि my new favorite line is कभी आओ ना खुशबू लगा के. So at that point I would have said that. What are some things that sound like everything you say is this question is literally इतने गंदे और वाहियात सवाल. okay, what are Content the बात few करके things that बना. sound like compliments but are insults? कभी आओ ना खुशबू लगा के. कभी आओ ना खुशबू लगा. There you go. This one even I could answer. Everything. This applies to everything in life. I खुशबू. It's like everyone was Firdaus at one point.
And then Jimshed. I also love this question. This is a very cool question. So I why think- don't I ask you the questions and What you is answer? the dumbest way you've been injured? Is what PG is this? It is totally X. The new gender. Since I would like to keep working in the media, the dumbest way I have been injured is, which happens often, is मैं बातें करके हाथ हिला रही होती हूँ और अक्सर मैं अपने मुंह पे चढ़ लगा देती हूँ. Nice. But And can you've we been not? I injured. don't want to put this. Because मैं बातें करते करते अपने मुंह पे चढ़ मार देती हूँ. Nice. अच्छा. Which celebrity annoys you the most these days? Muneeb Nawaz, oh my god. Oh, I'm a celebrity. Yes. Oh my god. Then you're as much of a celebrity as I am. So नहीं नहीं जान दे. औकात जान एक दे. जितनी है दोनों की. अच्छा सो मुझे ये बताए. Last Google search. मैं ऐवी मुफ्त में किसी के शो पे नहीं आती, ठीक है? और मैं नहीं. मेरे पास और पैसे मैं भी आई नहीं हूँ है, मुफ्त. sorry. मैं आई हूँ मुफ्त. अच्छा हाँ. Google search last. नहीं यार. Oh nice. How to lose weight in 1 week. In 1 week. क्योंकि ड्रामे की शूट आ रही है. हाँ, ये भी एक है. हफ्ते में पतला होना है. What job would? यार no man. What is Ask wrong? me. Ask me, Janu. Ask me. What job would you be absolutely horrible at? I want to show the people who ask this question. Is the question very good at or very bad at? Very bad at. Absolutely horrible at. Job. What job would you be horrible? A sales job. No, you won't be. आगे बढ़. Oh my हम god. क्या वाहियात पीछे यार, सवाल दे रहा लेकिन सवाल वाहियात. देखो मतलब लगा लूं के. शेर तो शेर. कंटेंट वाला सवा शेर. हाँ. अच्छा so this one's easy चलो let's close this at अच्छा आजाद पे कोई छम छम करते हैं. छम छानी छम 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 मेरा टूट गया बटन अम्मी हो गया. अच्छा. thank you so much jokes मतलब I can't even ask you the next question because they'd be like what cancel last When did you screw everything up but no one found out it was you? Right now. And that's the end of the show. life Life. when it started No, when I happened to life. yeah exactly done thank you